Okay, let's see. Let's complete this whole part. So now it says calculate the magnitude of VA and VB. So you have to find out its value. How these values are going to be found, we just saw that two bodies are moving, particles are colliding, and one moves upward, other moves downward. So it is going to have its downward momentum, and the other one will be having its upward momentum. So this one in the upward direction will be positive, in the downward direction it will be negative. So in the marking scheme, this positive sign is not like the correct one. It's an incorrection done here. Okay, moving onwards, we have to just find out. We have to calculate the magnitudes of the velocity of this. So what we are going to do, we will be applying the law of conservation of momentum along x-axis separately. So how we will be applying the law of conservation x-axis separately? So this will be equals to the total momentum before collision along horizontal was what? 8.35 into 10 raised to power minus 25. This was equals to mass of VA cos of 60 degree plus m of VB cos of 30 degree. And along y-axis, we know the momentum of both the bodies along y-axis before collision is 0. So 0 plus 0, this will be equals to what? M of VA sine of 60 minus M of VB sine of 30. Right? So from here, we are going to make one of the VBs as a subject. So let's say it will be placed, how this equation will be further written. It will be written in this way, MVB sine of 30 degree will be equals to M of VA sine of 60 degree. This mass and this mass cancels out. So we can first make VB as a subject. VB will be equals to what? VA into sine of 60 degree whole divided by sine of 30 degree. So VB की जो भी आपके पास ये सब्जेक्ट बन के वैल्यू बनी है, place it in this first equation. So at the end, आपके पास सारे variables, all the variables are going to be in terms of VA. So your final answer for VA will be written as 250 meter per second. And when this value is going to come, you are going to place it in this equation. So you will get VB, and this VB will be equals to 430 meter per second. Guys, is this understandable? You have to just solve them with sine 60 or sine 30 को cos 60 cos 30 को you can just type it on the calculators और ये दो variables आपके पास बन जाएंगे VA VB and you can simply just plug one of the variable in another equation और उससे आप simultaneously इनको solve कर लेंगे VA VB को जी बेटा ये इसमें आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है हफ्सा अहमद आपने वी बी को सब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे इस वी बी को जो सब्जेक्ट बनाया अब इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट इन करेंगे व्हेन यू आर गोइंग टू प्लग इन द फर्स्ट इक्वेशन वी बी की जगह तो आपके पास ये वाली पूरी टर्म भी वी ए में बन जाएगी और ये वाली पूरी टर्म भी वी ए की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो उस वी एज और वी एज को एड अप करेंगे आप साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करें फॉर दिस योर मैथ शुड बी स्ट्रांग इनफ इक्वेशन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली बस सॉल्व करना है in terms of the variable VAs and VB. ठीक है आपने क्या किया इसको एक्स एक्सिस के along मैं दोबारा से बता देता हूँ what we did in this question. Um, we did such questions in the class as well. So it's a two-dimensional momentum. Whenever there's a two-dimensional momentum, आप x axis पे
लॉ अलग से लगाते हो और वाई एक्सिस पे लॉ अलहदा से लगाते हो। ठीक है। सो एक्स एक्सिस पे लॉ लगाने का क्या मतलब है कि द टोटल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस बिफोर कोलिजन एंड द टोटल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस आफ्टर कोलिजन दैट विल बी सेम, and the total momentum along vertical axis before collision and total momentum along vertical axis after collision will be same। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने एक्स एक्सिस के लिए अलग से एक इक्वेशन बनाई है पूरी, क्योंकि एक्स एक्सिस का मोमेंटम मैं पहले से जान चुका हूं यहाँ पे कि उसने लिखा हुआ है 8.4 इंटू 10 पावर माइनस 25। सो इट इज रिटन हियर 8.4 इंटू 10 पावर माइनस 25 is the total momentum along x-axis. Then I just found the momentum of first ball along x-axis, then momentum of second ball along x-axis. Both are equated. Then along y-axis, what I did, there was zero plus of zero is equals to momentum along y-axis minus of momentum along negative y-axis या downwards। तो इस तरह मेरे पास ये दो इक्वेशंस आ गई। इस नेगेटिव को मैं लेफ्ट साइड पे ले गया क्योंकि ये सारा जीरो था। So it becomes mvb sin 30 is equals to mva sin of 60, and from this I got the vb, and vb value appeared as va into sin of 60 over sin of 30। और इनको जब मैं सॉल्व करूंगा vb को इसमें प्लग इन किया, so I just fetched the value of 250 meter per second and I got the vb as 430 meter per second। So this is how it will be solved for the two dimensional momentum। टू डायमेंशनल मोमेंटम में आप खुद घर बैठ के हाथ से प्रैक्टिस करके apply the law of conservation of momentum separately along x-axis and separately along y-axis। If you are going to do it, नहीं तो मेरे जो lectures हैं उनको एक दफा recall कर लें। Okay, move to the most important question। This is going to be question number 12 पे आइए please। ये बेसिक से सवाल है, क्वेश्चन 11 वन डायमेंशन के, तो इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 12। एवरीवन प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 12। So it is going to be at page 274। Come to page number 274। Come to page number 12, question number 12, page 274। Question says, what is meant by mass of a body? So how we are going to define mass? Mass can be defined as the amount of matter in a body, or it can also be stated as it is the property of an object to resist the change in motion। This is the appropriate definition for it, or a better definition for it। So how we will be defining mass? Mass of a body is defined as, in this way, it is the property of a body to resist the change in its motion। ठीक है, it is the property of an object to resist the change in its motion is known as mass। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पार्ट बी के ऊपर। देर आर टू ब्लॉक्स दैट ट्रेवल डायरेक्टली टूवर्ड्स ईच अदर along a horizontal frictionless surface। The blocks collide as illustrated in figure 3.1। So this is moving with positive 0.4 meter per second. This is moving to the left of 0.25 meter per second. After collision, this moves with a velocity of 0.2 meter per second to the right, and V moves also, and mass M moves with a velocity of V to the right। Question says, use Newton's third law to explain why
during collision, the change in momentum of A is equal than opposite to the change in momentum of B. So we just studied in the very first question today. We know force is given by what formula? Force is equal to delta P by T. Okay, force is equal to change in momentum over T. And we also studied that force exerted by block A is equal and opposite to the force exerted by block B. So we know if force and change in momentum are proportional to one another. So we can also say if this can occur, we can also say that change in momentum of A is equal and opposite to the change in momentum of B. So this also holds, right? So how we are going to answer it out? We are going to answer in this way: force on A by B is equal and opposite to a force on B by A. नेक्स्ट आप लिखेंगे पॉइंट फोर्स इज rate of change of momentum. Force is rate of change of momentum. Force किसके इक्वल होता है? Force is equal to rate of change of momentum, and as time of contact is same, and as the time of contact is same, तो होगा क्या? That change in momentum of A is equal and opposite to B. So this is how you will be stating it for 2 marks. Next question, it says determine speed V. So we need to find out the velocity of the block B after collision. तो हम क्या करेंगे? इसमें law of conservation of momentum लगाएंगे. So applying law of conservation of momentum. So when we will be applying the law of conservation of momentum, so let's see how it works. So applying the law of conservation of momentum, what it says, okay, the body which is moving to the right. So this will be equals to m1. What is m1? 3 types of m multiplied by v1. What is the velocity 1? Which is 0.4, and it is to the right, so it will be taken as positive. Then it is to the left, it will be taken as negative, like m multiplied by 0.25. This will be equals to 3 times of m multiplied by 0.20 plus m multiplied by v. So this is how you are going to apply the law of conservation of momentum. So in all of this, your m is going to be constant. So m on the left is taken as common. This appears 3 into 0.4 minus of 0.25. This will be equals to m is again taken as common. This will appear as 3 into 0.20 plus of v. This m and this m cancels out. So we will be left with the velocity when we are going to shuffle all the information. This velocity v will be equals to 0.35
This velocity will be equal to 0.35 meter per second. So this velocity appear as 0.35 meter per second. This is going to be its answer. J, is this understandable? Yes. Yes, sir. Okay. Moving onwards to the next part, you may take a few seconds to write it down with you. So we have just taken a negative sign here because the direction of the motion for both the bodies were in opposite direction. Both the bodies were moving in the opposite direction. So both of them were moving in the opposite direction. So it is taken as the sign is taken as negative, right? So sign will be taken as negative in this specific case. Okay, moving onwards to the next part. Next, it says calculate for the block the relative speed of approach. Gee, guys, how do we find out the relative speed? रिलेटिव स्पीड के दो तरीके हैं, या तो रिलेटिव स्पीड हम फाइंड करते हैं सब्ट्रैक्ट करके, या रिलेटिव स्पीड हम फाइंड करते हैं ऐड करके. सो व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, relative speed is subtracted, and when two bodies are moving in the opposite direction, relative speed is added. So if we want to find out the relative speed for this, so relative speed for VAB, क्योंकि ये दोनों opposite direction में, so it is going to be added. This will be 0.4 plus of 0.25. I taught you during the lesson, so this will become 0.65 meter per second. So relative speed of approach will be written in what way? This will be written as 0.4 plus 0.25, and this will be equated as 0.65. Next, it says relative speed of separation. This normally happens after collision. This is asking about after collision. So after collision, we can say what is happening. This is moving with a velocity of 0.2, and this is the velocity of the body V, and we just found in the previous part, this is 0.35. So as both of them are in same direction, the relative speed will be found in what way? Relative speed will be found by subtracting them 0.35 minus of 0.20. So when they are subtracted, it will become as 0.15. So relative speed of separation will be equals to 0.15 meter per second. So when they are in same direction, relative speed is found by subtraction. When they are in opposite direction, relative speed is found by addition. So now question asks, state and explain whether the collision is elastic or inelastic. So we studied one of the term for the elastic collision, and that term for the elastic collision was that the collision will be elastic if the law of conservation of momentum is followed. Number two, if the law of conservation of kinetic energy is followed. Number three, if the relative speed of approach is equals to relative speed of separation. तो हम यहाँ देख सकते हैं कि relative speed of approach ज्यादा है and relative speed of separation is less. So as you are going, so such type of collision is called as inelastic. So you are going to say it is inelastic. It is inelastic because it is inelastic because relative speed of approach is not equal to relative speed of separation. ठीक है, this is how it is to be answered.
Is this fine, guys? Yes, sir. Okay. So let's move on to question number अभी आप आए सारे. First, let's discuss this question number 16. I really want to discuss the graph questions first. तो मैं चाहता हूँ कि question number 16 पे सब आए please. So question 16 says that there is a block X. The block X slides along a horizontal frictionless surface towards a stationary block Y as illustrated in figure 2.1. Right? So in the first case, there is going to be a momentum of first block X, which is moving with a 0.4 kg meter per second, and Y is at rest. Okay, there are no resistive forces acting on X, so it moves towards block Y at time t equals to 0. Block X has a momentum of zero point 0.4. A shorter time later, both collide and then they separate out. So the variation with time t of the momentum of block Y is shown in figure 2.2. So ये block Y का momentum का graph show हो रहा है. This is a graph for the momentum of block Y. तो पहले आपका जो momentum है इतने टाइम के लिए रेस्ट पे रहा, फिर उसके ऊपर फोर्स लगी. कब तक फोर्स लगी? 0.60 मिली सेकेंड से लेकर 100 मिली सेकेंड तक उसके ऊपर फोर्स लगी, और उसके बाद वो टकरा, फिर वो उनकी कोलिजन खत्म हो गई, और फिर वो एक सर्टेन मोमेंटम के साथ मूव करता रहा. तो ये जो आपको पार्ट सारा शो हो रहा है 60 से लेकर 100 तक का, इस पे क्या लग रही है ब्लॉक वाई के ऊपर? फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन ब्लॉक वाई. अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे पूछा जा रहा है. वो कहता है डिफाइन लीनियर मोमेंटम. तो हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity. ठीक है, what is linear momentum? Linear momentum is the product of mass and velocity. Next it says determine the time interval over which the blocks are in contact with each other. So how much is the time? उस टाइम तक ये इन कांटेक्ट रहेंगे जब तक उस पे क्या लगती रही है? फोर्स लगती रही है. So they are in contact in how much time? From 100 milliseconds to 60 milliseconds. So you are going to write down for this as 40 milliseconds. राइट, यू विल बी राइटिंग कि कितने टाइम तक जो है ये टाइम इंटरवल में दे रिमेन इन कांटेक्ट. सो दे रिमेन इन कांटेक्ट फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 40 मिली सेकेंड्स. नेक्स्ट. नेक्स्ट इट सेज describe without calculation the magnitude of the acceleration of block y. So you can see that this is actually the graph between mass into velocity. You know, it's a momentum. So mass तो constant रहता है. It means कि body की जो velocity है वो क्या हो रही है? Change हो रही है 60 से 100 के दरमियान. और 0 से 60 के दरमियान जो velocity है वो 0 है, और 100 से y के दरमियान जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है. तो वी नो फ्रॉम 100 टिल 160, if velocity is constant, acceleration will be equals to 0. तो 60 से पहले भी acceleration 0 है, 100 के बाद भी acceleration जो है वो 0 है. It means कि what is happening in between 60 to 100, there is going to, क्योंकि straight line है, तो there is going to be a constant acceleration. There will be a constant acceleration. तो यही बात वो पूछ रहे हैं ग्राफ में, क्वेश्चन में, कि टाइम 80 से 100 मीटर के दरमियान आपने कैलकुलेशन के बगैर बताना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन. सो यू हैव टू जस्ट डिस्क्राइब. सो आप इसके मैग्नीट्यूड को बोलोगे फ्रॉम 80 टू 100 मीटर मिली सेकेंड, द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. There is going to be a constant acceleration between 80 to 100 milliseconds. And what about the time 100 milliseconds to 120 milliseconds? So we are just going to say that there is a
zero acceleration. So acceleration will be equals to zero. Is this understandable? ये हमने ग्राफ से रीड आउट करके बताया. This graph is not a velocity time graph, this is a momentum time graph. So momentum time graph का acceleration के हवाले से वही मीनिंग लेंगे जो हम velocity time graph का लेते हैं. Everyone is with me? Alright, moving onwards. Next it says determine the magnitude of the force exerted by block X on block Y. So we know force is equals to what? It is equals to change in momentum over change in time. So आप ये कैसे find out कर सकते हो? This is going to be found by the gradient of the graph. तो जब भी एक straight line होगा momentum और time के दरमियान ग्राफ, तो इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा, इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा, that will be equals to force. This gradient will be equals to what? This gradient will be equals to force. So how we are going to find out the force from here? Force can be found. इसका final momentum ले लो कितना है 0.5. Initial momentum कितना है आपके पास? Let's say it is 0 whole divided by कितने टाइम के अंदर ये हो रहा है? In a time duration of 40 millisecond. 40 into 10 power minus 3. तो ये आपके पास फोर्स आ जाएगी. दिस विल बी इक्वल्स टू 13 न्यूटन. So this is how we are going to find out the force over here. So the gradient of the graph will be equals to 13 Newton. So do remember this somewhere, that the gradient of a that the gradient of PT graph, I taught you this thing in the class as well, is equals to resultant force. The gradient of PT graph is equals to resultant force. Now it says sketch the variation of the momentum of block, say block X, with the time t equals to 0 to time t equals to 160. So see how much momentum is changed for block Y. तो हमने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम. द मोमेंटम गेन बाय वन बॉडी इज इक्वल टू मोमेंटम लॉस बाय अनदर बॉडी. तो इसका मैं कलर थोड़ा डिफरेंट करता हूँ एंड जस्ट टू explain it. So for instance, initially जब उस पे कोई फोर्स नहीं लग रही थी तो बॉडी ए का मोमेंटम क्या था? इट वाज जस्ट 0.4. इट वाज 0.4. और कितने इंस्टेंट तक 0.4 रहेगा? जब उसके ऊपर दोनों आपस में कोलाइड नहीं कर रहे. इसके बाद इसने कितना मोमेंटम गेन किया? 0.5 तक मोमेंटम किया. तो इसने मोमेंटम कितना लूज किया होगा? इट इज गोइंग टू लूज अ मोमेंटम टिल -0.1. तो आप एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे -0.1 तक. एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना देंगे -0.1 तक. उसके बाद जब वो कोलाइड होके हट गए, एक दूसरे से दूर चले गए, so you will be drawing a straight line afterwards. So this is how the graph will be drawn for the body Y. So by Y हमें कह रहा है कि इनिशियली जब वो कोलाइड नहीं किया उनका मोमेंटम है 0.4. सो उसका मोमेंटम 0.4 है जब तक उसने कोलाइड नहीं किया. जहां पर वो कोलाइड करना शुरू हुए तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में पढ़ा हुआ है, द मोमेंटम गेन बाय वन बॉडी विल बी इक्वल्स टू मोमेंटम लॉस्ट बाय अनदर बॉडी. तो अगर if this x is if this block y is attaining the momentum, तो ब्लॉक एक्स उतना ही मोमेंटम अपना डिक्रीज करेगा उतने ही टाइम में. सो इन अ 40 सेकेंड्स इट्स मोमेंटम डिक्रीज बाय 0.5. तो 0.5 से, अगर 0.5 से डिक्रीज करना है तो 0.4 कहाँ तक चला जाएगा? 0.1 तक. तो इट मीन्स 0.50 तक आपका जो मोमेंटम है वो लॉस्ट हुआ. और जैसे ही वो फिर हट जाएंगे, कोलिजन खत्म हो जाएगी,
तो इसी अमाउंट ऑफ मोमेंटम पे दे विल बिगिन टू मूव विद अ कांस्टेंट मोमेंटम। जी मैंने रिपीट किया, इज दिस अंडरस्टैंडेबल? Yes, speak up. Shall I repeat it again or what shall I do? ओके जी, वो कह रहे हैं कि ग्राफ बना के दें। ये तो जो पहले वाला ग्राफ बना हुआ था, द फर्स्ट ग्राफ वाज ड्रॉन फॉर व्हाट? द फर्स्ट ग्राफ वाज ड्रॉन फॉर ब्लॉक वाई। ठीक है, ये पहला वाला ग्राफ जो है ये वाला, ये वाई का ग्राफ बना हुआ है। वो कह रहे हैं अब एक्स का आपने ग्राफ बनाना है। तो अगर वो कहता है एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो ब्लॉक एक्स कितने मोमेंटम से मूव कर रहा है? 0.4 से। तो वो कब तक मूव करता रहेगा 0.4 पे? जब तक वो टकरा नहीं जाएंगे। तो दे आर कोलाइडिंग एट 60 मिली सेकेंड। तो 60 मिली सेकेंड तक आपने 0.4 तक बनानी है लाइन, कांस्टेंट मोमेंटम। फिर उसके बाद जैसे ही दे आर गोइंग टू कोलाइड, सो ड्यूरिंग कोलिजन व्हाट वी स्टडीड फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, जितना मोमेंटम एक बॉडी गेन करती है उतना ही मोमेंटम दूसरी बॉडी लूज करती है। सो इट हैज गेन्ड द मोमेंटम फ्रॉम 0 till 0.5. So it means it is going to lose, the body X is going to lose the momentum from 0.4 till 0.1। तो 0.1 तक वो अपना मोमेंटम लूज करेगी, और उसके बाद टकराने के बाद जो इनके मोमेंटम्स है उसी पे कांस्टेंट मूव करती रहेगी। तो यानी कि ये आफ्टर कोलिजन दिस बॉल एक्स, दिस बॉक्स एक्स will be moving with this constant momentum. Is this understandable now? तो यहाँ पे हमारा ये जो ये वाला क्वेश्चन है, दिस हैज एंडेड, राइट? So here the question has ended. So we will be stopping here, right? Yes, beta. Why it is 0.1? Because the reason is the momentum which is being lost over here is of 0.5 value. तो कहाँ तक ये मोमेंटम जाएगा अपने? जब गेन हुआ था वो 0 से लेकर 0.5 तक हुआ था ना। तो जब इनिशियल मोमेंटम दूसरी बॉडी का 0.1 है, तो वो कितना लॉस करेगा और अपनी 0.5 अमाउंट तक लॉस करता रहेगा, तभी वो 0.1 तक जाएगा। और फिर यहाँ पर वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। जी, इज दिस ओके? ऑल राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग humble and patient. So we are ending up our class. Thank you, खुदा हाफिज। Okay, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।